आज हम बनाने जा रहे हैं दाल का लच्छा पराठा। आपने देखा होगा कभी कभी दाल बहुत ज़्यादा बन जाती है और आपको कुछ मन नहीं कर रहा बनाने का, सो यू कैन मेक अ वेरी सिंपल एंड इजी रेसिपी विद दाल पराठा, और आप उसको लच्छा फॉर्म में बेल के एक बढ़िया करारा लच्छा पराठा खा सकते हैं। सो लेट्स प्रिपेयर इट। कई बार आपके सब्जी बनाने का मन नहीं होता, दाल बनाने का भी मन नहीं है, एंड इट्स लाइक डिनर तो बनाना ही है, सो दैट यू कैन यूज द लेफ्ट ओवर दाल एंड मेक डिलीशियस पराठास आउट ऑफ इट. It's very easy to prepare and it's very healthy and it utilizes your leftover. आपने ये डिश कहाँ से सीखी है? This is my mom-made's recipe. And I really love it, and I hope and I'm sure that you will also like it. तो हमारा डो तैयार है, and now we will prepare लच्छा पराठा out of it. पहले हम बना के रख लेते हैं, उसके बाद हम सेक लेंगे. अच्छा, तो इसको एकदम हमने फ्लैटन कर दिया है. हाँ. अब हम इसमें ऑयल लगा रहे हैं. लगाएंगे, and then we will fold it like this. मतलब पंखा टाइप जो हम बचपन में बनाते थे वैसा सा. ये डो तो बहुत सॉफ्ट हो गया होगा. हाँ, ये डो बहुत सॉफ्ट है. इट्स लाइक मक्का का आटा, ऐसा डो. ओके. और हम यहाँ पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, इससे वो इजली चिपक चिक हो जाए. and then we will roll it like this. ओह, We are done with all the swells. अब हम इनको बेल लेंगे और मजेदार लच्छा पराठा तैयार कर लेंगे. आप देख सकते हो कि इसकी लेयर्स अभी से अलग होने लगी हैं, and I am sure it will turn out to be a very delicious one. अभी आप इसको अच्छे से दबा के सेकें. I can see the lachas. Thank you, Priya.